Hi, my name is Aryan and I am a gamer. And this is my gaming system. Oh sorry, not this, but this. आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मेरे गेमिंग पीसी पारो, yes, that's her name, को देखा होगा. Isn't it a beautiful thing? Then why am I calling this HP लैपटॉप जिसका नाम भी मैं नहीं जानता my gaming system? ये वीडियो तो मैंने ऐसे शुरू किया है जैसे आप मानोगे कि पारो खराब नहीं ऑन हो रहा है, उसका PSU खराब हो गया है. तो अब आप कंसर्न होके पूछ रहे होगे, आर्यन डिड यू पैनिक? नो. आर्यन डिड यू क्राई? नो. थोड़े दिनों के लिए जब मैं बिना पीसी के पागलों की तरह घूम रहा था, तब जाके मैं सोचने लगा अबाउट हाउ आई यूज टू प्ले गेम्स बिफोर पारो केम इनटू द पिक्चर, एंड दैट गॉट मी थिंकिंग, व्हाट वाज इट लाइक? What was it like to play games on 10 FPS? What was it like to play games on 1280 by 720, 800 by 600, 640 by 480? What was it like to play games with random crashes? What was it like to play games on a system that could turn into an IED? What was it like to play games on an outdated system? What was it like to be a low end gamer? Let's find out together. ये फोटो देखो जो मुझे तुम लोग को दिखाना बहुत पसंद है. डोंट लुक एट द क्यूट किड, दैट्स मी. लुक एट द कंप्यूटर. ये फोटो ली होगी 2008 या 9 में, एंड इवन फॉर दैट टाइम दिस कंप्यूटर वाज आउटडेटेड, बट दिस इज द कंप्यूटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई इंटरेस्ट इन वीडियो गेम्स. Yes, I did spend like 4 years of my life being a high-end gamer, well, a mid-end gamer. But I also, and don't forget this, I spent 15 years being a low-end gamer. So जब मेरा पीसी बंद हुआ नया साल शुरू होने के कुछ दिनों के बाद, of course, I did panic for a few days, but after a few days I decided to make the most of my situation. I decided to use my cousin brother's old HP laptop that he abandoned for an absolute beast of a gaming laptop, which he bought for coding. अच्छा हाँ ये वन टैप देखो. Just to provide you with some context regarding how old this laptop existed around the time when all of the people in our country could hear Ravi Shastri going, Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup after 28 years. ये लैपटॉप 2011 का है. This thing right here is probably older than a lot of people who are watching this video right now, which is insane. मुझे ये लैपटॉप का मॉडल भी नहीं पता. भाई ये लैपटॉप पे बैटरी भी नहीं है. इट नीड्स टू बी ऑन चार्ज ऑल द टाइम. सो इट्स नॉट रियली अ लैपटॉप एनी मोर. मुझे तो पता भी नहीं था भाई कि ये चीज़ ऑन होती है कि नहीं. और आप मेरे चेहरे पे खुशी देख सकते हो व्हेन द लैपटॉप डज टर्न ऑन. ऑन होता है. All those years of memories of playing on a low-end system came rushing back. Now since it was my brother's old laptop, I did decide to reset the laptop first, लेकिन उसके पहले I decided to check into the specs of this laptop just to see what I'm working with. And this is where I got my first surprise. But a positive one. The laptop, for the time being, and I think this is important that I tell you guys, it has 12 GB RAM. I don't know how. It's got 12 GB RAM and a 1 TB SSD. लेकिन the processor is still i3 5th generation. Like it's got i3 500. That's like a Maruti 800 having BMW or Ferrari wheels. You know, it's still a Maruti 800, but it's got really cool tires. How about that? My brother did his fair share of work to keep the laptop alive and well. मुझे पता है अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 12 GB DDR3 रैम और 256 GB SSD होने के बाद ये सिस्टम लो एंड कैसे है. इसकी CPU चिप 2010 की है, 16 साल पुरानी है. You see, when I say low-end systems, it is a huge range. अब मैं आपके सिस्टम का पर्टिकुलर केस तो कवर नहीं कर सकता, but I did try my best to keep the guide accessible to everyone. So some things might work for you, some things might not. It's honestly a case of trial and error. And if you are in the lucky few जिनके पास अच्छा सिस्टम है and don't get scared while checking a game's minimum system requirements, you spoiled people can watch this video as well. Help your fellow low-end brothers out. पूरी रात लैपटॉप रीसेट करने के बाद आई इंस्टॉल्ड स्टीम एंड एपिक गेम्स एंड माई HP लैपटॉप, चंद्रमुखी, was ready and primed up for some exciting gaming sessions. इतना एक्साइटेड कि मुझे पता ही नहीं था कि पुराने लैपटॉप्स कम इंस्टॉल्ड विद अ कस्टम एग्जॉस्ट जो रॉयल एनफील्ड को टक्कर दे सकते हैं.
Now I know which games you guys want me to start with. Those AAA games, those big budget, high graphics, huge open world with extremely good gameplay. And I'm talking about games like Cyberpunk, God of War, Witcher 3, The Last of Us, Detroit. और ये सारे गेम्स खेलने का एक ही तरीका है, buy a fucking PC. So let's be realistic. AAA games from 2008 to 2012. ये है आपका sweet spot and that's how exactly even I started. मेरा golden target चंद्रमुखी के लिए था the GOAT game, Elder Scrolls 5 Skyrim. One of the best open world RPGs ever made. अगर ये गेम आपके सिस्टम पे चल जाएगा, trust me, you will be very happy. But you know, making this game run on Chandramukhi, well, it turned out to be a lot more challenging than I thought. After I finished installing Skyrim, सबसे पहली चीज पता है मैंने क्या करी? मैंने तुरंत गेम की सेटिंग सबसे लोवेस्ट पॉसिबल ऑप्शन पे डाली. The oldest trick in the book of the low end gamer. A trick that this kid would use all the time. So 5 मिनट वेट करने के बाद जब गेम फाइनली लॉन्च हुआ, पहली बात तो मैं इतना सरप्राइज था कि गेम लॉन्च भी हुआ. बट यू नो, एज आई लाइक टू से, द गेम wasn't रनिंग, इट was crawling. बहुत ज्यादा लैग कर रहा था. गेम पे 5 या 10 FPS आ रही होगी मुश्किल से. लेकिन देखो, यहाँ पे मेरी नॉलेज काम आई. ये डमएस छोटू वुड हैव गिवन अप, बट नॉट दिस गाय. मैं अब आप लोग को बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ. व्हेन प्लेइंग ऑन अ सिस्टम लाइक दिस, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट गिव अप व्हेन द कंप्यूटर फाइट्स बैक. Mods. I knew Skyrim had a really strong modding community and I was convinced कि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मॉड्स में ज़रूर मिल जाएगा. तो मैंने आधे घंटे बैठ के रिसर्च करके मॉड्स इंस्टॉल करे एंड बैंग, Skyrim was now officially running. What's up guys, Editing Aryan here. Now some of you guys might have seen this frame and went, why is the PC working again? That's because मेरा पहला वीडियो आइडिया ये था कि मेकिंग स्काईरिम रन ऑन अ लो एंड लैपटॉप, उससे जाके ये वीडियो आया है. सो जो फुटेज आप देख रहे हो स्काईरिम की, वो मैंने रिकॉर्ड करी थी मेरे पीसी खराब होने से पहले. जस्ट क्लियरिंग दैट अप. पेशेंस गाइस, इट्स अ क्वेश्चन अबाउट पेशेंस. बस धैर्य रखना आना चाहिए ऐसे समय में. एंड आई नो लो एंड गेमर्स आर सम ऑफ द मोस्ट पेशेंट पीपल ऑन दिस प्लैनेट, क्लोजली फॉलोड इन सेकंड बाय आर्सेनल फैंस. डेफिनेटली इस साल तो जीतेंगे, डेफिनेटली. There is no possible way we lose, right? Please don't lose. I want to get a tattoo. 3 साल से रुका हूँ मैं. यहाँ पे बनवाऊंगा मैं टैटू, यहाँ पे. I was pleasantly surprised by how well Skyrim was running on this system. At 720p, but चल रहा था. I even had a long gaming session and game ने ज़्यादा lag भी नहीं किया. Naturally, riding the high of my Skyrim success, I decided to check in on another absolutely classic Bethesda game, Fallout 3. जो मुझे एपिक गेम्स पे फ्री में मिला था. शाउट आउट एपिक गेम्स. फॉलआउट 3 आया था 2008 में. अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे, भाई 2008 का गेम, उस टाइम तो धोनी के बाल भी लंबे थे, इतना पुराना गेम क्यों खेलूंगा मैं. लिसन, जस्ट बिकॉज अ गेम इज ओल्ड डज नॉट मीन कि दैट गेम इज बैड. वो गेम भले 2008 का हो, बट इट इज़ अ फिनोमिनल गेम. और ग्राफिक्स के स्टैंड पॉइंट से तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये गेम 2008 का है. सो फॉलआउट 3 इंस्टॉल करने के बाद मैंने देखा कि गेम ने मेरा सिस्टम ऑटो डिटेक्ट करके अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स पे डाल दिया. नाउ मी एंड सम अदर रियली स्मार्ट लो एंड गेमर्स, वी आर स्मार्ट इनफ टू रियलाइज दैट दिस इज अ ट्रैप टू टर्न योर सिस्टम इनटू अ आईईडी और अ हीटर, विच एक्चुअली लुकिंग बैक माइट बी अ गुड थिंग अगर आप नॉर्दर्न स्टेट्स में रह रहे हो तो. मैंने गेम के ग्राफिक्स तुरंत लो किए एंड आई ऑल्सो हैड टू इंस्टॉल अ स्मॉल फिक्स फॉर द गेम टू रन ऑन इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स एंड बूम, another absolutely classic and a huge game running on Chandramukhi. Am I falling in love? Honestly, आप ये दोनों games easily 6-7 महीनों के लिए खेल सकते हो without getting bored. But I kept venturing forward in my low-end journey because I just really wanted to see अब और क्या experiment करके देख सकता हूँ आगे. So here's a quick highlight for you guys. Next, I installed Assassin's Creed, played it for 10 minutes and then quit. Not because the system was lagging, but the game is really boring now. फिर मैंने The Walking Dead install किया and let my brother play it. The Walking Dead also running really well. Then I decided to check in on my hot stuff. लियोन ऑल्सो रनिंग डिसेंटली वेल, कभी कभी थोड़ा लैग कर रहा था बट मैनेजेबल. फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राई अ सुपर हीरो गेम. सो आई इंस्टॉल्ड बैटमैन आर्खम असाइलम जो 2012 में आया, विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू रन बट इट वॉज रनिंग रियली वेल. लेट्स जस्ट से देयर वर नो साइंस ऑफ अ मिस्टर फ्रीज. गेट इट.
गुड जो लेकिन पता है एक गेम जो मुझे वापस खेल के बहुत मज़ा आया हैज़ टू बी इट इजीली हैज़ टू बी जस्ट कॉज 2। जस्ट कॉज 2 इतना केओटिक गेम है, अगर मुझे इजीली एक्सप्लेन करना हो, प्लेइंग जस्ट कॉज 2 इज़ अ लॉट लाइक वॉचिंग अ रोहित शेट्टी फिल्म। जस्ट embrace everything that is happening in the game or the movie and you will have probably one of the best times। अगर आपने कभी पहले जस्ट कॉज 2 या जस्ट कॉज 3 नहीं खेला, स्पेशली जस्ट कॉज 2, डोंट मिस आउट ऑन इट, इट्स रियली फन। क्या आप लोग को पता है विचर 3 के अलावा 2 और विचर गेम्स है? विचर 1 was released in 2008 and it looked like this। I'm a witcher. Yeah, I bet Fallout 3 looks incredible now। बट जो गेम मुझे खुद जेन्युइनली ट्राई करना था और मुझे इंटरेस्ट था खेलने में, एंड आई रियली वांटेड टू सी लाइक ये सिस्टम पे वो गेम चलेगा कि नहीं, एंड दैट गेम वाज माय अदर गोल्डन टारगेट, ऑलमोस्ट लाइक अ सिल्वर टारगेट, विचर 2। मुझे स्टार्ट से पता था दैट अ गेम लाइक विचर 2 माइट जस्ट बी अ ह्यूज एम्बिशियस पुश फॉर दिस सिस्टम, बट डैम इट, अ मैन कैन ड्रीम। तो फिर मैंने विचर 2 इंस्टॉल किया एंड इट रैन एट दैट ग्लोरियस स्पीड ऑफ 4 फ्रेम्स पर सेकेंड। सो मैंने सोचा ओके, स्काईरिम वाला ट्रिक वापस यूज करेंगे, गोइंग टू लुक फॉर मॉड्स ऑन द इंटरनेट, इंस्टॉल इट एंड देन द गेम इज गोइंग टू रन, राइट। I found the mod and I installed it on the game and then the game started running like this। Wow, I mean मैं barely समझ पा रहा था मेरे स्क्रीन पे क्या हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी खेलने की कोशिश करते जा रहा था। I was trying to power through because after all that's what my 15-year experience of being a low-end gamer had taught me। Be grateful कि गेम चल रहा है and play it as it is। And you know that's when it hit me। My cycle of installing AAA games and being able to barely run them was broken। Because I think we can be honest here that this is not a fun way of playing a game। मेरे हिसाब से मैं बस गेम खेल रहा था, एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था। Do you guys get what I'm saying? आई अंडरस्टैंड बहुत एक्साइटिंग होता है कोई गेम जो आपको लगा आपके सिस्टम पे बिल्कुल नहीं चलेगा स्टार्ट्स रनिंग, बट मैन दैट डोपामीन रश डज नॉट लास्ट लॉन्ग। मुझे लगता है जब आप गेम्स ऐसी कंडीशन में खेलते हो ना, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ द गेम। Maybe this is just the spoilt me talking from the last 4 years of experience of playing on a high-end system, and now I'm just struggling to come to terms with the fact that I need to play on this system again। But I think there is some truth to what I'm saying। ये तो मैंने, एंड आई विल बी ऑनेस्ट हियर, केवल वीडियो के लिए मैंने AAA गेम्स वाले पार्ट से स्टार्ट किया था। मैं चाहूँ तो मैं आपको और 10, 11, 12 गेम्स और बता सकता हूँ जो आपके सिस्टम पे रन कर सकते हैं, बट कैन आई बी बोल्ड इनफ टू आस्क द क्वेश्चन, why not look past AAA games? PC AAA games are like a small island on a huge ocean of video games। So I decided to switch gears and try something new, and तब जाके मुझे ये सिस्टम पे गेम्स खेलने में मज़ा आया, and this is where the guide gets interesting because the next thing in my crosshairs were emulators। गेमिंग एमुलेटर्स का काम होता है आपके सिस्टम को ट्रिक करना इनटू थिंकिंग कि इट्स अ गेमिंग कंसोल। सी, nice and simple definition। So the first question in your mind, and naturally it will be, Aryan, is emulation the best option for a low-end system? Maybe। I also have another better one which I will tell you guys later on in the video, but let's talk about emulation first because I think it's a really good option, definitely better than AAA games which look like Snake on your nanny's phone। I started with the PlayStation 1 emulator, DuckStation। आई नो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि PS1 एमुलेटर, इतने पुराने गेम्स। अगेन आई रिपीट द सेम पॉइंट, जस्ट बिकॉज इट्स ओल्ड डज नॉट मीन दैट इट्स बैड। एंड ऑनेस्टली मैं PS1 एमुलेटर सिर्फ एक गेम रेकमेंड करने के लिए बोल रहा हूँ। So there's something you like about me, huh? Yeah, you've got a great butt. आई नो मैं मेटल गियर के बारे में पूरे टाइम बात करता रहता हूँ, बट आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू लो एंड गाइज टू रियली एक्सपीरियंस MGS1। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे अच्छे गेम्स हैं PS1 में जो आप खेल सकते हो। नाउ ऑफ कोर्स आई कांट गिव यू गाइज एन इन डेप्थ ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू इंस्टॉल DuckStation ऑन योर सिस्टम। जस्ट लुक इट अप ऑनलाइन, हाउ टू इंस्टॉल DuckStation एंड PS1 ROMs। You guys are smart enough, I believe in you। Atmanirbhar Bharat। Now here comes the part that I was really excited about, PCSX2, PS2 emulator। और PS2 पे इतने सारे, I mean इतने सारे अच्छे गेम्स हैं कि मैं क्या बताऊं। जब मेरा PC चल भी रहा था ना, I remember I spent like good solid 2-3 months just playing PS2 games on it, all through PCSX2।
So it was natural that I would try to run PCSX2 on Chandramukhi. Unfortunately, वैसे चल तो गया emulator, but all of those games that makes PS2 emulator worth its while, they were lagging. Games like NFS Underground 2 lag कर रहा था. गाड़ी चल रही होगी 120 माइल्स पर आवर पे, बट मुझे तो लग रहा है 5 पे चल रही है. डेविल मे क्राई 3 जो मुझे बहुत पसंद है वो लैग कर रहा था, एंड स्पेशली मेटल गियर सॉलिड 2 लैग कर रहा था. So it was really disheartening, but then at the same time there were a lot of other good games that were running. There was a Naruto game that ran really well. There was a Dragon Ball C game that ran really well. गाइस तुम लोग मानोगे नहीं मैंने कौन सा गेम चला लिया ये लैपटॉप पे. इट्स फकिंग क्रेजी. Spider-Man 2. But yeah, I'll be honest, it did sting a bit when I couldn't play the best games. So मुझे पता था कि मुझे अब कोई और alternative ढूंढना पड़ेगा इसका. Something just as fun as the PCSX2 emulator but less demanding on the system. And here is where RetroArch came to the rescue. What is RetroArch? Do you guys remember back in the day there used to be these gaming cassettes which would say 99999 games in one, while in reality there were only 12 or 15 games copy pasted again and again and again? Well, RetroArch is the emulator that brings the 99,000 games in one cassette wala dream to reality. All the retro consoles you can imagine, all of them working on your low-end system easily. कोई lag नहीं, कुछ नहीं. और मैंने बहुत सारे क्लासिक गेम्स खेले जो मैंने पहले खेले ही नहीं थे. अनफॉर्चुनेटली मैं वो गेम्स बता नहीं सकता आप लोग को विदाउट अ याकुजा हिट स्क्वाड अपीयरिंग बिहाइंड मी एट नाइट, एंड दोज हु आर क्लेवर इनफ विल अंडरस्टैंड मैंने कौन से गेम्स खेले थे. एंड ऑनेस्टली यू कैन आस्क इन द कमेंट्स अगर आपको नहीं समझ में आया मैं कौन से गेम्स की बात कर रहा हूँ. पीपल इन माई कम्युनिटी आर रियली स्मार्ट. आई थिंक अगर एमुलेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो वो है कंट्रोलर. यू डू नीड अ कंट्रोलर टू रियली एन्जॉय एंड किक बैक एंड रिलैक्स विद दीज गेम्स. आई नो एमुलेटर्स ऑप्शन देते हैं MNK यूज़ करने का, बट इट्स वेरी ऑकवर्ड एंड अनकम्फर्टेबल टू प्ले ऑन, स्पेशली फॉर मी सिंस आई हैव जायंट एस हैंड्स. एंड अगर आप सिंगल प्लेयर गेम्स इन जनरल खेलते हो, आई डू रिकमेंड गेटिंग एन कंट्रोलर इवेंचुअली बिकॉज इट्स मच ईजियर दैट वे. और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा महंगा वाला लो. यू कैन बाय एनी चाइनीज चीप कंट्रोलर until unless you can afford to buy the premium ones. But trust me, I am aware, I know how much we hate the idea of spending money on a video game. That's why I called emulation the second best option. Because there are some absolute golden video games that you might be sleeping on that can easily run on your system. और मैं यहाँ पे वो पुराने गेम्स की बात नहीं कर रहा कि Max Payne खेल लो, GTA खेल लो, NFS खेल लो. That's what this little guy would have recommended to you. But what this guy did, जो मैंने किया है, let's just say that it grew my love for Chandramukhi tenfolds. What I did, and it turned out to be the best thing for these systems, is I switched over to indie games. Ah shit, here we go again. Another video where Aryan talks about how great indie games are. What can I say? It's not my fault that these games are this good. और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ये पूरी इंडस्ट्री कहती है. पिछले साल ही 2 games were nominated for Game of the Year, and if you keep up with gaming, you know 2025 was a packed year for video games. और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये दोनों गेम्स आपके लो एंड सिस्टम पे चल भी सकते हैं. आई कैन बेट दैट दिस इज समथिंग दैट एज अ लो एंड गेमर यू माइट नॉट हैव इवन ड्रीम्ड ऑफ. क्या मेरे सिस्टम पे, मेरे ये खटारा सिस्टम पे गेम ऑफ द ईयर नॉमिनेटेड गेम्स चलेंगे? I know this guy never imagined something like that happening for him. I remember being on a low-end device and how disconnected I felt from the entire gaming world. कि यार इतने सारे अच्छे गेम्स आ रहे हैं बट मेरे पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है ये अच्छे गेम्स चलाने का. Well, indie games are a bridge that connects this gap. Because जिस लेवल पे Hollow Knight, Stardew Valley, Undertale एक high-end सिस्टम पे चलेगा, उसी सेम लेवल पे वो एक low-end सिस्टम पे भी चलेगा. So it's the same level of experience irrespective of the grade of system that you're playing on. There are so many advantages to indie games, especially beneficial to you if you're on a low-end system. पहली बात तो इनका size बहुत छोटा होता है. Games like Hollow Knight जिनमें आप 30, 40, 50 घंटे spend कर सकते हो has a download size of 3 GBs. या तो दूसरा एग्जाम्पल देख लो स्टारड्यू वैली, जिसमें आप इजीली, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा जब मैं कहता हूँ, यू कैन इजीली स्पेंड 1000 hours in, हैज अ इनक्रेडिबली स्मॉल डाउनलोड साइज. इंडी गेम्स हैव ग्रेट आर्ट, गेम प्ले, म्यूजिक. आई नो मैं ये सब पहले भी कह चुका हूँ अपने वीडियो में, बट अगर आप ये सिस्टम पे हो ना, इंडी गेम्स इज वेयर इट्स एट. आई नो इट वॉज फॉर मी.
मैंने खुद हॉलो नाइट सिल्क सॉन्ग, सेलेस्ट, स्टारड्यू वैली, अंडरटेल, इनसाइड, ग्रिस, हेडीज, ये सारे गेम्स चलाए एंड ऑल ऑफ देम वर रनिंग प्रिटी स्मूथली। हाँ, मैं चाहता तो मैं GTA 4, MGS 5, फार क्राई 3, एजियो ट्रिलॉजी ये सारे गेम्स चलाने की कोशिश कर लेता एंड यू नो व्हाट, ये सारे गेम्स शायद से चल भी जाते, बट barely I would not have enjoyed my experience of playing those exceptional games. मैं पूरे टाइम स्ट्रेस्ड रहता कि मेरा लैपटॉप इज गोइंग टू एक्सप्लोड एंड मैन वीडियो गेम्स आर मेंट टू रिलीज स्ट्रेस, नॉट इंड्यूस इट. Like the two indie games that did not run on my system because they were slightly demanding were Firewatch and Outer Wilds, which I totally get, but 95% of the games run really well. अब of course एक possibility है कि मैंने आपके कंप्यूटर का केस कवर ही ना किया हो और आपका सिस्टम ये लैपटॉप और इससे भी बहुत ज़्यादा पुराना है, then I think I do have to stress that brother it's time for an upgrade. And then honestly अगर आपका कंप्यूटर उतना पुराना है, you can use your mobile phone. I know I've seen people talk about emulating games on their mobile phone. I've seen people beat Hollow Knight while playing on their phones. I don't know how exactly that works. I think that's a topic for another video, but वो भी एक possibility है जो आप explore कर सकते हो. You can also turn your phone into a PSP through emulation, and PSP पे तो बहुत अच्छे games हैं explore करने के लिए. मैंने phones का केस इस वीडियो में cover इसलिए नहीं किया because I wanted to focus on the laptop. But your phone is a serious option you can consider if your PC or laptop is more than 15 or 16 years old. Because your phone is capable of so much more than just scrolling reels and keeping multiple apps open in the background. You know what, let's do this thing. Let's look at the amount and variety of video games that I managed to play on this system. Open world, action adventure, horror, action, retro games, stealth, story driven, hard games, platformers, casuals, and so much more. Honestly, इतने सारे games खेल पाना on a system that's 15 years old, I see it as an absolute win. अब मैं ये भी नहीं कहने वाला कि मुझे तो अब मेरा पीसी चाहिए ही नहीं, मैं तो अब इस पे ही खेलूंगा. आई एम नॉट दैट क्रेजी. आई डू मिस प्लेइंग गेम्स ऑन द बिगर स्क्रीन, लेकिन मेरा लो एंड पे गेम्स खेलने का एक्सपीरियंस वॉज मच बेटर देन आई थॉट एंड नाउ आई एम मच मोर कंफर्टेबल एंड डेफिनेटली विल नॉट पैनिक व्हाइल आई एम बिजी ट्राइंग टू गेट माई पीसी फिक्स्ड. दैट्स फॉर श्योर. आई थिंक अगर आप मुझसे पूछते हो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था ऑफ प्लेइंग गेम्स ऑन अ लो एंड सिस्टम, आई विल से इट वाज डेफिनेटली अ पॉजिटिव एंड अ लर्निंग एक्सपीरियंस. आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट डिस्क्राइब्ड इट लाइक मैं लिंक्डइन पे अपना जॉब एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ. Aryan found the experience of playing on a low-end system insightful, challenging but thought-provoking. हाँ, लेकिन मैं ये भी एडमिट करता हूँ playing on a low-end system, it sucks. But it can suck a lot less if you know what you're doing. And that's what this video was about, to help you or nudge you in the right direction. लेकिन पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या सीखी? That there is a certain beauty to playing games on a low-end system. ब्यूटी जिसके बारे में मैं भूल गया था आफ्टर गेटिंग माई पीसी. आफ्टर ऑल आई डिड स्पेंड मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ बीइंग अ लो एंड गेमर. उस टाइम मैं ये बात समझ नहीं पाता था एंड आई एम नॉट द ओनली वन बट a lot of people, especially people that are from here. Majority of us did not start on a high-end system. We all started from a low-end system. Our love for video games didn't come on like some 1 lakh, 2 lakh, 4 lakh ka PC or a PlayStation 5. It came from that slow-ass office laptop that used to be in your home, your brother's PC, your friend's PC, your cousin's laptop. And I know this because I see the comments on my videos and I can tell you that 95% of us share the same or a similar experience. And I am really thankful to this system for reminding me of that experience. So whenever I see someone talking about their experience of playing Road Rash, IGI, Max Payne, Vice City, San Andreas, Most Wanted, or complain about their pain of playing on low end, I want you to know that I see myself in you, and so do other thousands of people like me. And for that, I thank you. Thank you for helping me stay in touch with this guy who didn't know any better. Thank you for reminding me about why I fell in love with video games in the first place. Thank you for helping me find a sense of community in a digital world that I do not understand. Thank you very much, and I hope you get that dream system of yours very soon.